name is Manish, and today I'm going to tell you how system works online resistance monitoring system, which is DERMS, Digital Earth Resistance Monitoring System. So we need to log in the UI. So first we need to put the user ID and the password. After that, we log in as an admin user. Admin has the all the authority to do everything in this uh, UI. First of all, we have the one sites, and there is the one devices inside the sites, and this is the device information. How many sensor are available in the sites, and this is the graph which fetch from the sensor using TCP communication. These are the sensor data we fetch using TCP communication. First, we need to add a site and put your site's name, which is anything you can put for the remember like A, and you need to put anything and sites one and location is like now अभी टेस्ट के लिए डाल देते हैं पिन कोड 20155 ऐसे करके डाल देते हैं यू and country which is India, then submit. सो सक्सेसफुली हमारा एक साइट ऐड हो गया है, तो हम जाएंगे उस साइट्स के अंदर और we will add multiple sites and multiple device corresponding of the separate sites. So we are inside the A sites, and we need to add a device and put your device name and follow the instruction like this. We need to put the user id, which is device user id, like this. We need to put the face sensor. If you have and add a face sensor, put one. How many sensor you have? 1 2 3 4, whatever you want to put the number of sensor. One, which is we need to set the threshold. If threshold across the threshold, system will alert according to the threshold. So we need to put the threshold, which is 5 5 5 5 5, and we need to add one SPD sensor, and the threshold it will be 5, and resistance sensor 1, and its threshold will be 5. 1 GN meter and threshold will be 5. So submit. Successfully add one devices inside the sites. Look at this, one site inside one devices inside the sites. So you can click on view profiles, show all of those information about the devices, and there is the information. And if data comes in 1002, so graph will be generated here. सो इसका जो ग्राफ इसका डेटा नहीं आ रहा है, तो एक्चुअल इसका ग्राफ नहीं बन रहा है. सो टेस्ट में हमने 1001 का डेटा आ रहा है जो कि आईपी से असाइन होता है. उस आईपी पे द्वारा इस डिवाइसेस को सेपरेट इस डिवाइस आईडी पे डेटा हम पुश कर रहे हैं. ये सारे सेंसर्स होते हैं जिस पे हम फेस मीटर्स का डेटा ऐसे शो होगा, एंड जीएन मीटर का डेटा इस तरीके से शो होगा. यहाँ से आप लाइव मॉनिटरिंग देख सकते हैं अपने ग्राउंड टू न्यूट्रल वोल्टेज को, एंड एसपीडी सेंसर विच इज ऐसा आपको कुछ दिखाई देगा जब आपका डिवाइस फैच हो रहा होगा. तो इस तरीके से वैल्यूज आपको फैच होती हुई दिखाई दे रही होगी.
जैसे यहाँ पे 1465 से नीचे क्रॉस किया, इस तरीके से आप वैल्यूज देख पा रहे होंगे। टेम्परेचर का डेटा आपको इस तरीके से शो होगा, which is live data fetching from the devices. So we'll understand how add sites and how add devices. Next go to the डैशबोर्ड जो है वो ये है, जिस पे आप सारा ओवरव्यू देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे एडमिन यूज़र कि आप एज ए एडमिन लॉगिन किए हैं। साइट्स को मैनेज करने के लिए सेपरेट हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है साइट्स मैनेजमेंट, जिसके अंदर आप किसी साइट की इंफॉर्मेशन को एडिट कर सकते हैं। लाइक हमने टेस्ट बना रखा है, साइट्स 2 पर रखा है, उसको हम एडिट कर सकते हैं। लाइक हम इसको चेंज कर देते हैं और अपडेट कर देते हैं। वैसे ही जैसे अभी हमने ए साइट्स को बनाया था, तो इसको हम ए भी कर देते हैं और इसको अपडेट कर देते हैं। यू हैव फुल अथॉरिटी टू चेंज एवरीथिंग if you are admin user. You can delete, also you can delete user sites, and inside the AB you have show the all the devices, and you can press on this device and you can see all the device information and change and update device information. I need to update 6 threshold of the GN meter, and update is device data is updated. You can create devices from here also. And next option is user management. The user management is a hierarchy way, which is top hierarchy of admin, and then technical technician, and then user. Okay, admin can also create a technician user and normal user. Technician user has authority, all the devices information can show, but he cannot create any sites and any devices. Also user, when I have create the technical user, which is like tech UID, which is tech one, password which is, you have to put your password whatever you said. I have said this admin at that 123. So I have created a user. This user can log in and access all the sites. And this is user, normal user. He cannot access all the sites. He can show and he can access particular site whatever I assign, like user, user 1, admin, admin, created. Right now we have 0 sites assigned uh, particular user. So we need to show, यहाँ से हम देख सकते हैं कि कितने साइट्स असाइन हुए हैं पर्टिकुलर इस यूज़र को। अगर यू वांट टू assign a site, तो you can go inside the user and assign the sites, assign sites, and there is 2 sites, sites test and site AB. So we need to press AB. There is 1 devices in the AB, so we need to uh, click device and submit. So now successfully add 1 devices assigned this user. We have the authority to edit the user information, and also reset the password and delete the user. Okay, so next move on, next step, which is resistance monitoring. There is the information tab, there is most information tab, where we can show all the information about the sites and devices. Like this there is 7,
which is cross the threshold, which is 5. Now we the stable value, जैसे ही आपका स्टेबल वैल्यू आ जाएगा तो यहाँ पे मैसेज दिखाई देगा, अगर वेन एवर यू आर होवेवर रेजिस्टेंस इट विद इन द सेफ रेंज। और ऐसे ही जब रेड आएगा तो यहाँ पे अलर्ट दिखाई देगा कि आपका थ्रेशोल्ड क्रॉस हो गया है, आप नेसेसरी एक्शन ले सकते हैं। सो वट एवर, अगर यहाँ पे बहुत सारे साइट्स एंड डिवाइसेस आ जाते हैं तो यू कैन प्रेस द 100 sites or look at the all the sites here and show the information, and you can download also the information, all the report and all the resistance value report. You can press here and download as a excel file. So like this, there is a 9 threshold will be crossed, and this is an alert showing a resistance higher, safer limit. So this is, now we can move the next step, which is temperature monitoring. So यहाँ पे आपका टेम्परेचर भी शो होगा, टेम्परेचर जो कि 24.60 और ह्यूमिडिटी 75.70। इस तरीके से आप जाके इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। सेटिंग्स के अंदर एडमिन का हम पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं, अगर पासवर्ड ज़्यादा लोगों को पता चल गया है या फिर आप चाहते हैं कि एडमिन का पासवर्ड को चेंज करना, you can easily change the password from here, and also the all the user password change from here, and the separate user tab, and the next reboot, this reboot button and shutdown button, you can reboot and you can shut down and you can log out here. So now we need to log out and successfully log out. So we need to log in as a technical user, जो कि हमने आईडी बनाया था। So we access the all the sites, but we cannot create a sites and we cannot create a devices, only we can view. Technician also site management, look at this, but he cannot edit any sites and device, but ये केवल देख सकता है। User management, he can create a user and delete the user only, he cannot create the technician, and he can assign only user, user को devices assign कर सकता है। Same features, technician also view the all the resistance value and download the reports, so all the alarms and settings में वो टेक्नीशियन अपना पासवर्ड को चेंज कर सकता है। and the same feature reboot shutdown. Now we need to log in and log out. Log in as a user 1 and we need to log in. So we log in, जैसे कि हमने देखा कि हमने यूज़र 1 को हमने सिर्फ ए बी साइड असाइन किया था, तो उसको टेस्ट वाला साइड नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने उसको केवल ए बी साइड असाइन किया था, और ए बी साइन में 1002 पे कोई भी डेटा भी नहीं मिल रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ग्राफ नहीं मिल रहा है, हमें सिर्फ डेटा 1001 पे मिल रहा था जो कि वहाँ पे टेस्ट वाले साइट्स के अंदर था। So there is limited options of user role, only can view and download and temperature and the alarm and the same the features of settings. You can change our own password and you can reboot. The all information about the DERMS digital earthing monitoring system, how configuration and कैसे कैसे वैल्यूज पुट किया जाता है, किस तरीके की इंफॉर्मेशन हमें डालनी होती है, ऑल द इंफॉर्मेशन इज हियर। थैंक यू वेरी मच।